Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Anubha Hodgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी श्रोताओं का स्वागत। आधे घंटे के कार्यक्रम में लाएंगे आप तक अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित है बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा। Thank you, Vishal. Benchmark domestic stocks gain around 0.8%. Sensex closes near 49,800 level. Nifty settles above 14,600 mark. Rupee appreciates 14 paisa against the US dollar. And global stocks rose amid expectations of more US fiscal relief package to boost pandemic-hit economy. प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में 0.8% का उछाल। सेंसेक्स 49,800 के स्तर के करीब पहुंचकर हुआ बंद। निफ्टी ने 14,600 के स्तर को किया पार। रुपए में डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की मजबूती। और अमेरिका में महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए और अधिक वित्तीय राहत पैकेज की उम्मीदों के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी। जी, शुरुआत में सबसे पहले शेयर बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में 0.8% का उछाल आया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 394 अंक यानी 0.8% की वृद्धि से 49,792 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.85% की बढ़ोतरी से 124 अंकों पर 14,645 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी तेजी रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.08% की छलांग लगाई और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.59% की बढ़त दर्ज हुई। The benchmark domestic stocks today surged around 0.8% amid positive global cues. The BSE Sensex closed 394 points or 0.8% up at 49,792. The NSE Nifty also climbed 124 points or 0.85% to trade at 14,645. The broader market at BSE also gained. The BSE Mid Cap Index jumped 1.08% and the BSE Small Cap Index rose 0.59%. In the Sensex pack, shares of 20 companies climbed while 10 logged modest losses. Maruti was the top gainer as it surged 2.8%, followed by Tech Mahindra which climbed 2.7%. Mahindra & Mahindra and Asian Paints both rose 2% and Reliance appreciated 1.9%. On the other side, Power Grid fell 1.8% and NTPC declined 1.4%. HDFC Bank ended 0.8% down and ITC slipped 0.6%. In sectoral indices, 16 out of the 19 sectors rose. Auto sector stocks were top gainers as it gained 2.2%. IT climbed 1.8%, while tech, energy and industrials surged 1.5%. On the other hand, utilities, telecom and fast-moving consumer goods ended marginally. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,541 companies climbed, while 1,473 declined. Shares of 161 companies remained unchanged. 263 companies rose to their 52-week high, while 36 companies fell to their 52-week low. Mr. Bhattacharya, today the indices recorded it was a record high today, and the market is continuing its upward trend. So, how do you see this trend? Well, there are, as you rightly pointed out, that this is an increase that is coming after 2 days of declines, 2 sessions of decline to be more precise. And the reasons for this recovery today, in my view, are threefold. At one level, the global factors, the inauguration of the new president in the United States of America,
Mr. Biden later in the session with late night our Indian time will also herald new stimulus packages from the U.S. Fed and the U.S. government. So part of that money probably would flow into the emerging economies, India being the leading countries among the emerging economy pack. So that has also fueled some sort of sentiment, the positive sentiment in the stock market. That's number one. And number two is that the corporate results season is on, and the third quarter corporate results have so far shown a bullish tendency on the part of Indian companies coming back into the black in a fairly sustainable way. So that is the second factor, that the expectation of more corporate earnings has fueled the rise. And the third factor is there is a lot of expectation around the budget to be presented in about 10 days' time. So what you are seeing a combination of positive factors, that the budget may come up with a major spending package, which will once again hopefully boost demand in the economy, which will again go into the bottom line growth for the corporate sector. And the second is the corporate sector third quarter results. And the third is, as I said, is the global economy is probably coming out of the uncertainties of a lack of adequate stimulus, and $1.9 trillion is not a small amount of money. If that is pumped into the U.S. economy, then a part of it will obviously will go into the stock markets of the emerging economies, including India. So a combination of factors, that is why you are seeing the two sessions of declines being reversed today in quite a strong way. And I think this trend will continue. There will be booking of profits as the moment the Sensex or the Nifty tries to reach that benchmark level of either it is 50,000 or it is closer to the 15,000 for Nifty, and the stock market players, investors will book their profit. But essentially, the big event that the stock markets will have to look for is what happens after the budget, whether the budget sustains the bullish expectations of the market. That will be something that we will come to know probably in the 1st, the 2nd, and the 3rd of February in the coming month. जी भट्टाचार्य जी, यहाँ जो एक बात ध्यान खींचती है कि आज सेंसेक्स से भी ज्यादा उछाल जो है वो मिड कैप इंडेक्स में देखा गया है, 1.08% का उछाल है। तो क्या ये मिड कैप सेगमेंट में जो उछाल देखने को मिल रहा है, क्या ये बजट से जो कुछ उम्मीदें बंधी हुई हैं मिड कैप सेगमेंट को, या ये उछाल एक रूटीन में है? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि ये रूटीन है। देखिए, जो एमएसएमई जो कंपनीज जो थी, जो माइक्रो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस कंपनी, जिन काफी इनके रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज मिड कैप इंडेक्स में आते हैं, तो उनमें जो कोविड का जो झटका लगा था वो काफी था, और उम्मीद अब ये की जा रही है कि बजट में एमएसएमई के लिए एक बड़ा भारी पैकेज होगा। ये पैकेज कैसे आएगा? ये इनकम टैक्स रिलीफ से आएगा, कोई कॉर्पोरेशन टैक्स स्पेशल पैकेज आएगा, या कोई फाइनेंशियल एलोकेशन, क्रेडिट एलोकेशन में कुछ आएगा। तो ये तो बजट ही बताएगा, पर जरूर एमएसएमई सेक्टर की एक जो हमारी अर्थनीति में इसका जो प्रभाव काफी ज्यादा है, 30% जीडीपी का इनका शेयर है, और करीबन 1/4 एम्प्लॉइज देश के जो सारा वर्कफोर्स जो है वो एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं। तो ये सेक्टर एक अहम हिस्सा है हमारे अर्थनीति का। तो इसीलिए मैं समझता हूँ आशाओं की जो केंद्र जो है वो एमएसएमई सेक्टर यानी मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा केंद्रित है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि उसमें उछाल ज्यादा आया है। Mr. Bhattacharya, of course, the markets are reacting positively to a number of factors like you just listed out, but we have also seen volatility recently, like the previous two sessions.
How is that going to affect? Like, are we looking at volatility? Will the market keep up this up and down trend? Well, I think the volatility is part of any market that is on its northward journey. Now, no market goes up in a unidirectional, uniform manner. This is a very rare situation that it happens. Now, what is happening and what has been happening in the last few weeks is that the trajectory is northward, but clearly that after gains in a few sessions, savvy investors, particularly the many foreign portfolio investors, or even the domestic retail investors, are booking their profits because there is a view in the market that probably the markets have priced in the recovery that will take place in the next financial year already in the market. So there is that slight awareness of that these markets are probably slightly ahead of the fundamentals. So therefore, while the markets are maintaining its northward trajectory, but savvy investors are booking profits as and when it reaches a certain point. And which is why what you are seeing that over a period of, you look at the last 1 month of stock market movements, you will see at every 7th or the 10th day, there is some kind of a dip. But the market buoyancy is such, the sentiment is so positive that they recover that and probably reach a new level as we have seen today. Talking of India's growth, now the Fitch ratings came out today and they have it has put India's medium-term growth potential at around 6.7%, 6.5%. But the ratings have also warned against weak implementation of reforms, among other things. What are the red flags we are looking at? I think the red flag here would be that while economy next year will expectedly achieve a kind of an arithmetic recovery, in a sense, being the base factor coming into play next year. This year's, if you look at the estimate of the first advance estimate, the size of the Indian economy in the current year would come down to around 195 lakh crore. Now, clearly, from 195 lakh crore, it is going to bounce back by at least in a nominal terms 12-15%. So therefore, the markets, the economic growth will take place in an arithmetic manner because of the low base effect. But at the same time, the size of the economy will still be lower than what it used to be in the current year or even last year. So therefore, these are the danger signals that the aggregate demand will still not be what it used to be in the last year. So we have to wait and see in what way the economic policies make sure that through adequate investment, quick investment in sectors that create jobs, therefore can create demand, can revive and put the Indian economy on a higher growth trajectory. So therefore that will be a key question, whether the budget can deliver on that front. The second point would be that there is some sort of an uncertainty over the farmers' agitation, how their agitation will pan out. So therefore the markets are also looking at it. Agriculture is still about 16% of the Indian economy, whether it has an adverse impact, because these reforms were all positive developments. Now if these reforms are rolled back, it will be a negative signal for the markets. So that is also another red signal, so to say. And the third and the final thing that I would mention at this point in time is to what extent the government makes sure that the Indian industry remains competitive and does not get into a sheltered mindset where it wants to have more protection by way of higher import tariffs. Now that will affect the Indian industry's competitiveness, therefore getting linked to the global supply chains. So these are the three broad factors that one has to be watchful about.
जी भट्टाचार्य जी, बजट की बात हो रही है और बहुत ही कम दिन बचे हैं बजट आने में भी। वित्त मंत्री से सभी को उम्मीदें हैं कि बजट में कुछ न कुछ अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने के लिए, पटरी पर लाने के लिए वापस कुछ घोषणाएं सरकार की तरफ से की जाएंगी। तो ऐसी क्या घोषणाएं या ऐसे क्या कदम सरकार उठा सकती है जिससे कि अर्थव्यवस्था फिर से एक अपनी पूरी गति पकड़ सके? देखिए, एक तो पहला बात यह है कि पहली बात जो बजट में देखा जाएगा, किस तरह से सरकार अपने जो खजाने को संभालने के लिए कौन से कदम लेती है। क्योंकि इस वक्त सरकार को सरकार को अपना ही एक एहसास ये हुआ है कि उनको स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, निवेश करने के लिए बहुत जरूरी चीज है। जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो काफी नीचे आ गई है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर को देखें, प्राइवेट सेक्टर का हालत अभी इतना अच्छा नहीं है और उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल है वो काफी नीचे है। वो तभी बढ़ेगा जब अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्ट करे। वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करे, क्या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करने के बाद या कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को इंसेंटिवाइज करने से या टैक्स इंसेंटिव देने से, वो हमें देखना पड़ेगा। पर उसका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जरूरी ये होगा कि किस तरह से सरकार अपने खजाने को और भी स्ट्रेंथन करे। और मैं समझता हूं कि ऐसी हालात में अगर जो डिस्ट्रेस सेक्टर को है, जो अगर टैक्स रिलीफ की शायद जरूरत होगी, पर जो सेक्टर ने इस कोविड के जमाने में अच्छा आय दिखाया है, जैसे स्टॉक मार्केट में अच्छा आय हुआ है काफी। अगर आप देखें मार्च से आज तक की अगर जो स्टॉक मार्केट की ग्रोथ हुई है वो करीबन 70% से ज्यादा हुई है। तो क्या सरकार ये कर सकती है कि किस तरह से कोई एक कोविड सरचार्ज या कोविड सेस की जैसे चीज से, जिससे कि खजाने में थोड़ी बहुत वृद्धि हो, और उस खजाने की वृद्धि के निर्भर करते हुए अगर सरकार अपनी जो व्यय जो है, एक्सपेंडिचर स्टिमुलस दे सके, जिसकी बहुत इकोनॉमी में सख्त जरूरत है, और उससे एक सस्टेनेबल ग्रोथ इस अर्थनीति में आ सकती है। Mr. Bhattacharya, remaining with the budget, containing the fiscal deficit is always a big worry for the government. So, very briefly, what do you see should be the upper limit of the fiscal deficit in this budget, giving all the... In my view, the current year's fiscal deficit will have to be framed in light of the COVID situation, where the government's revenues have going to fall short because of the COVID and the lockdown. So therefore, this year, obviously, our fiscal deficit will go well beyond 3.5% of GDP. It may well end up at well over 6.5% or 7% or even 8% of GDP. Now, nobody will question that. But the important point that people will watch, the markets will watch, is what is the fiscal deficit the government manages to rein in for next year. I personally feel is that this is the time where you need not just worry about the fiscal deficit, but actually worry more about how you can extend more relief to the needy sectors, how you can invest more in the economy so that long-term growth trajectory is kept intact. And the current concerns of fiscal deficit should probably take less of a priority. Instead, government would do well to instill confidence in the economy, in the markets, by laying out a new roadmap for a fiscal consolidation program with new targets, with new debt figures that need to be achieved. So I think it is time. COVID-19 is not an ordinary setback. It is time to revisit the fiscal consolidation roadmap, set new targets which are realistic and achievable, so that the markets get a clear idea which direction the government is taking. There is no need for a sharp contraction in the fiscal deficit. In a post-contraction year, this can do more harm than good. जी, आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं डॉलर के मुकाबले रुपए के प्रदर्शन पर। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 14 पैसे मजबूत होकर 73 रुपए 3 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी के बीच रुपए में ये मजबूती देखी गई। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 90.50 पर स्थिर बना रहा।
The Cabinet has given its approval for the investment of over 5,200 crore rupees for 850 megawatts Ratale hydroelectric project located on River Chenab in Kishtwar district in the Union Territory of Jammu and Kashmir. This will be a new joint venture company of National Hydroelectric Power Corporation NHPC and Jammu and Kashmir State Power Development Corporation Limited with equity distribution of 51% and 49% respectively. Our correspondent reports that the construction activities of the project will provide direct and indirect employment to around 4,000 people and will contribute immensely in the overall socio-economic development of Jammu and Kashmir. Mr. Bhattacharya, now the government has been focusing on improving and introducing, of course, new infra projects in Jammu and Kashmir and Ladakh. In this light, how will this hydro project benefit the Union Territory in terms of it getting revenues that gets back to it? Well, power is an important infrastructure input for economic activities, not just economic activities, even to improve social and social welfare in that state. The government has obviously, after the August 2019 decisions, the government has planned an extensive outreach program to make sure that the economic development trajectory picks up in that region. The hydel capacity to be created will not only meet the state's power requirement, and remember that this is like a green power, because it will mean that the states and the countries, to that extent, dependence on thermal energy will come down a little bit once those hydel power plants go on stream. So therefore, our share in the total, in the total energy sector, for the mix for the hydel, the share of hydel is very, very low compared to the huge potential the northeastern states and Jammu and Kashmir region has. So it is good that the focus is back on creating more hydel capacity within the broad environmental concerns to be kept in mind. Once these hydel power is generated in larger quantities, I'm sure you will be able to see an increased pace of economic activity, and also for the state generation of revenues, because this is a NHPC and state government joint venture. जी, और अब बात नवाचार की कर लेते हैं। नीति आयोग ने आज भारत नवाचार सूची का दूसरा संस्करण जारी किया। नीति आयोग ने कहा है कि ये सूची देश को नवाचार उन्मुख अर्थव्यवस्था के रूप में कायाकल्प करने की सरकार की निरंतर वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है। इस अवसर पर आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नवाचार देश को आत्मनिर्भर बनाकर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भट्टाचार्य जी, जब इनोवेशन और नवाचार की बात होती है तो उसके साथ जाहिर सी बात है कि R&D, अनुसंधान और विकास का कार्य जो है वो अपने आप आकर के जुड़ता है। तो R&D जो है के मामले में हमारे देश की स्थिति अभी बहुत संतोषजनक नहीं है। तो इस दिशा में सरकार की तरफ से आप क्या समझते हैं कि देखिए, जो नवाचार की जो आपने बात कही या इनोवेशन की जो बात कही या अनुसंधान और विकास का जो बात किया आपने, ये हमारे देश की जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के लिए बहुत बड़ा एक आयाम, एक अहम भूमिका निभाता है। ये हमें आमतौर से हमें इसकी अनुभूति नहीं होती है हमें, पर हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो जीडीपी आपकी जो बढ़ती है वो सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ या प्रोडक्शन बढ़ने से ही नहीं होती है। वो एक बहुत बड़ा एक हिस्सा उसका ये होता है कि कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी गेन हुई है, जो गुणवत्ता कितनी बड़ी है, जो प्रोडक्टिविटी कितनी बड़ी है। और मैं समझता हूं कि ये नवाचार कहिए या अनुसंधान विकास के ऊपर जोर कहिए, इनोवेशन इंडेक्स में जो स्टेट्स को आगे आने की जो एक नया जो एक इंसेंटिव दिया जा रहा है, मैं समझता हूं उससे देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जो जीडीपी में इसका जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि जीडीपी सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने से नहीं होता है, पर पर्सन पर इनपुट से प्रोडक्शन कितना ज्यादा बढ़ता है, उसकी जो मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न जो है कितनी ज्यादा होती है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो मैं इसीलिए समझता हूं नवाचार के ऊपर जो स्ट्रेस दिया गया है, इनोवेशन के ऊपर जो स्ट्रेस दिया गया है, अनुसंधान और विकास के ऊपर जो एम्फेसिस दिया गया है, ये हमारे देश की अर्थनीति, देश की
जो सकल घरेलू उत्पाद के लिए एक अच्छा सूचक है। जी, और अब रुख करते हैं एशियाई बाजारों का। अमेरिका में नामित वित्त मंत्री जेनेट येलेन के अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए भारी भरकम वित्तीय राहत पैकेज का समर्थन करने के बाद आज एशियाई शेयर बाजारों में मिलाजुला कारोबार देखने को मिला। हांगकांग का हैंगसेंग 1.1%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.5% ऊपर बंद हुए। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुआ, जबकि जापान का निकेई 0.4% नुकसान में रहा। अंतर्देशीय कारोबार के दौरान आज यूरोपीय शेयर बाजारों में बढ़त का रुख रहा। लंदन के FTSE 100 में 0.1% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि फ्रांस का कैक और जर्मनी का डेक्स 0.6% तक की बढ़त के साथ रहे। Moving on to the U.S. markets, Wall Street's main indices rose yesterday as the U.S. Treasury Secretary nominee Janet Yellen advocated for a hefty fiscal relief package before lawmakers to help the world's largest economy ride out a pandemic-driven slump. The Dow Jones Industrial Average ended 0.4% up. The S&P 500 climbed 0.8% and Nasdaq Composite Index surged 1.5%. Mr. Bhattacharya, just like the U.S. is expecting another fiscal stimulus package, can we also expect announcement of another fiscal stimulus package from the finance minister in the budget, even though she's already announced a series of such packages in the last 1 year? This is exactly the point. You have answered your question yourself. I think the government of India has already announced a total stimulus package of around 30 lakh crore, out of which the government's fiscal costs may have been very much less, but the fact cannot be denied that a stimulus package has been given riding on RBI liquidity or credit allocations or the government's own fiscal provisions. So I think the budget will have some stimulus, but I don't expect the budget to rely only on providing stimulus. On the contrary, the budget will probably allocate more resources to its own departments to increase investments in infrastructure, increase investments in the healthcare infrastructure, also in many areas of the economy which require some sort of a healing touch after the adverse impact of COVID and the lockdown. Moving on. Oil prices today rose amid expectations that the incoming U.S. administration will deliver massive stimulus spending that would lift fuel demand and draw down crude stocks. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $56.40 per barrel, while WTI crude prices were around $53.70 per barrel. और अब बात सर्राफा बाजार की। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों में उछाल से आज घरेलू सर्राफा बाजारों में भी तेजी रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 117 रुपए महंगा होकर 49,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 56 रुपए की मजबूती से 66,092 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर सोना बढ़त के साथ $1,850.50 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.40 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। Very short comment on the oil prices, Mr. Bhattacharya. Of course, inflation, easing of inflation has, put no pressure on the government to reduce excise duty now. But can the common man expect some relief in the budget announcement, or will the prices go on? I don't think it will be too early to expect a relief on this front. But if the crude oil prices keep increasing, I think sometime during the year, the government will have to reconsider its excise duty imposed that were increased last year in the wake of falling crude oil prices. So it may not be immediate, but I would not rule out a reduction in the excise imposed on crude oil retail products. I don't rule that out. But remember that the commodity cycle has turned up and now everything is going up. So you have to expect that commodity prices, whether it is gold or crude oil, prices will go up. भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stocks gain around 0.8%. Sensex closes near 49,800 level. Nifty settles above 14,600 mark. Rupee appreciates 14 paisa against the dollar. And global stocks rose amid expectations of more U.S. fiscal relief package to boost pandemic-hit economy. And that's it in this edition of Market Mantra. Do join us tomorrow at 3:30 p.m. for Money Matters. Goodbye. Namaskar.
Market Mantra.